and Major Vinod Kumar saluting the President, leading a contingent of the Quadrat weapon system. It's a surface-to-air missile, very accurate and very powerful. It's got a tremendous range. This particular regiment was raised in 1977 when these rockets were introduced into the Indian Army. And in the middle you see the radar equipment. There it is, which captures the enemy aircraft and then guides the missiles to it. Being shown for the first time. And now the tanks fitted with trolls which clear up mines on the battlefield being displayed for the first time. The contingent under the command of Captain Sunil Kumar. It's a fighting tank fitted with a 100mm main gun at the tank, and these trolls that go in front, as you can see them, any mines that come under, they blow up without damaging the tank and clearing a way for the tanks without trolls, the fighting tanks following them. Personnel are from an engineer regiment raised in 1974 from the Bengal Sappers, and Major Hemant Sharma, commanding of the EME, commanding the Mobile Tropo contingent. The Mobile Tropo Scatter is a microwave system to be used in battlefields for communications, made in India. It's a radio set with corresponding frequency transmitting systems, multiplexers, power generator and other ancillary systems. And that's the antenna which gives it its range. This is a new unit raised in 1983 which is manning the Mobile Tropo. And this view that you see, a beautiful view, T-72 tanks and backwards from top of India Gate. And saluting the President is Captain Nilal Kumar Bhatia, contingent commander of the Infantry Combat Vehicle, which is an amphibious vehicle, gives protection to the troops in wartime in the field so that they can go, and you probably see an anti-tank rocket fitted and also a gun which are fitted. The personnel of this mechanized infantry regiment was raised in 1983. There are 3 crew members and 8 Jawans. Guns dipping in salute as they go past the President. And the last of the mechanized columns is the heavy-duty recovery vehicle. This has very good cross-country capability. It is used to recover tanks who may have bogged down or broken down. Range of 30 kilometers, and this gun can be used both against aircraft as well as giving ground support to troops at the front. The personnel of this contingent are from a medium regiment which was first raised in 1943. Mounted on a tank chassis, and now saluting the President is the contingent commander Major Gurdeep Singh of the 122mm multi-barrel rocket launcher. That's Major Gurdeep Singh. This contingent comprises of a rocket troop consisting of 3 rocket launchers manned by a crew of 5 Jawans, including the driver. And the 40 rockets that you see can be fired in just 20 seconds and have a devastating effect on the
enemy. Contingent manned by the Rocket Regiment of the Indian Artillery. And now, Captain Salaria, contingent commander of the Shilka, saluting the President. This is primarily designed to provide low-level air defense to armored formations. It has radar, as you can see, which has a range of 20 miles and up to 2,500 kilometers. These guns have a devastating effect on any approaching aircraft. It's a composite air defense regiment raised in 1966. The Shilka. And Major Vinod Kumar saluting the President, leading a contingent of the Quadrat weapon system. It's a surface-to-air missile, very accurate and very powerful. It's got a tremendous range. This particular regiment was raised in 1977 when these rockets were introduced into the Indian Army. And in the middle you see the radar equipment. There it is, which captures the enemy aircraft and then guides the missiles to it. Being shown for the first time. And now the tanks fitted with trolls which clear up mines on the battlefield being displayed for the first time. The contingent under the command of Captain Sunil Kumar. It's a fighting tank fitted with a 100mm main gun at the tank, and these trolls that go in front, as you can see them, any mines that come under, they blow up without damaging the tank and clearing a way for the tanks without trolls, the fighting tanks following them. Personnel are from an engineer regiment raised in 1974 from the Bengal Sappers. And Major Hemant Sharma, commanding of the EME, commanding the Mobile Tropo contingent. The Mobile Tropo scatter is a microwave system to be used in battlefields for communications. Made in India. It's a radio set with corresponding frequency transmitting systems, multiplexers, power generator and other ancillary systems. And that's the antenna which gives it its range. This is a new unit raised in 1983 which is manning the Mobile Tropo. And this view that you see, a beautiful view, T-72 tanks and backwards from top of India Gate. And saluting the President is Captain Nilil Kumar Bhatia, contingent commander of the Infantry Combat Vehicle, which is an amphibious vehicle, gives protection to the troops in wartime in the field so that they can go, and you probably see an anti-tank rocket fitted and also a gun which are fitted. The personnel of this mechanized infantry regiment was raised in 1983. There are 3 crew members and 8 Jawans. Guns dipping and salute as they go past the President. And the last of the mechanized columns is the heavy-duty recovery vehicle. This has very good cross-country capability. It is used to recover tanks who may have bogged down or broken down. It has a hydraulic winch capable of pulling up to 25 tons and a multi-directional crane capable of lifting up to 11 tons.
the corps of electrical and mechanical engineers man these heavy recovery vehicles. The last of the contingents of the mechanized column in front of the saluting base, the heavy-duty recovery vehicle. This recovery vehicle has a good cross-country capability. It is used And as for tanks and other heavy equipment. the heavy-duty recovery vehicle passes the saluting base, to take you on from here, Keshav Pandey. धन्यवाद श्याम। मैकेनाइज्ड कॉलम्स यानी यांत्रिक दस्तों के बाद परेड में अब आएंगे हमारी थल सेना के मार्चिंग दस्ते। राजपथ का ये विहंगम दृश्य, दोनों ओर रंग बिरंगी पोशाकों में दर्शक, ये हैं मार्चिंग दस्ते। कई विश्व युद्धों और दुश्मनों के खिलाफ हमारी अपनी लड़ाई में जो बहादुरी इन लोगों ने दिखाई है वो आम जानकारी की बात है। अनुशासित कदम, चुस्ती और फुर्ती देखते ही ये पहला दस्ता मद्रास रेजिमेंट का, और इसके बाद ग्रेनेडियर्स का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं मेजर होशियार सिंह डोगरा। ग्रेनेडियर्स ने 2 परमवीर चक्र के अलावा अन्य चक्र प्राप्त किए। मद्रास रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के तहत धुन नैनीताल होगा। जो ब्लैक एंड वाइट टीवी पर देख रहे हैं उन्हें शायद इन रंगों की छटा नहीं मिल रही होगी। राजपुताना राइफल्स हमारी थल सेना की बहुत पुरानी टुकड़ियों में एक। नायक कैप्टन H.S. शाहिद अपने लंबे इतिहास में अपनी कीर्ति युक्त सेवा के लिए इसने एक परम वीर चक्र और 6 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किए। राजपूत रेजिमेंट कमान संभाले हैं मेजर केसी कुंजुआ। सम्मान कितने ही मिले, परमवीर चक्र 1, विक्टोरिया क्रॉस 1, महावीर चक्र 7 और वीर चक्र 56। दूर से ये दृश्य और अब सलामी मंच की ओर बढ़ती आ रही है जाट रेजिमेंट। राष्ट्रपति इन मार्चिंग दस्तों की सलामी स्वीकार करते हैं। सिख रेजिमेंट हमारे देश की सेना की बहुचर्चित रेजिमेंटों की फहरिस्त बिना सिख रेजिमेंट के अधूरी है। कैप्टन देश चीमा के नेतृत्व में मार्च करता ये दस्ता इसी सिख रेजिमेंट का है। चुस्त दुरुस्त देश पर मरने के वाले ये जवान 2 परमवीर चक्र और 9 विक्टोरिया क्रॉस के विजेता। बैंड है बंगाल इंजीनियर्स और आर्मर्ड कोर का। और ये जो धुन आप सुन रहे हैं इसका नाम है कर्नल बोगी। काले कोट, रंग बिरंगी पगड़ियां और इनके वाद्य यंत्र। डोगरा रेजिमेंट दस्ते की कमान संभाले कैप्टन R.S. अजूला। 42 महावीर और वीर चक्रों के अलावा ये रेजिमेंट 3 विक्टोरिया क्रॉस जीत चुकी है। कुमाऊं रेजिमेंट सेना के 3 भूतपूर्व अध्यक्षों जनरल श्री नागेश, जनरल के तिमैया और जनरल T.N. रैना के रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट। दस्ते के नायक कैप्टन P.K. सिंह
महावीर चक्र 9, वीर चक्र 67 और सर्वोच्च परमवीर चक्र 2। असम राइफल्स हमारी सेना की कम उम्र वाली रेजिमेंटों में एक है। इसने अपने जीवन के अभी कुल 44 वर्ष पूरे किए, किंतु अब तक कई युद्ध सम्मान प्राप्त कर चुकी है। जम्मू कश्मीर राइफल्स इतिहास 165 वर्ष पुराना। कैप्टन BS नेगी। और ये बैंड जम्मू कश्मीर राइफल्स और डोगरा रेजिमेंटल सेंटर का धुन, जिसका नाम गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से जुड़ा है, धुन का नाम गंगोत्री। 9 गोरखा राइफल्स अभी तक दस्ते जो सलामी देते हुए निकल रहे हैं, उनकी साफे पगड़ियां देखी आपने रंग बिरंगे। ये दस्ता अपने हेड के साथ पहचाना जाता है। इतिहास इसका 178 वर्षों का और 3 विक्टोरिया क्रॉस के विजेता। हमारी सेना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रशासकीय सेवा आर्मी सर्विस को इतिहास 200 वर्षों से भी पुराना है। और अब जाने पहचाने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के जवान चुस्ती से मार्च करते हुए। आपने कभी सेना के मोटरसाइकिल सवारों के करतब देखे हैं? यदि नहीं तो जब भी मौका मिले जरूर देखें। जान हथेली पर लिए मोटरसाइकिलों पर सवार जवानों की टुकड़ी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का दस्ता होता है और इनके पीछे मिलिट्री पुलिस बैंड। एक तरफ लाल साफों से युक्त वादक, इनके वाद्य यंत्र, और दूसरी ओर काली टोपियों, काले कोट, सफेद पेंटियों वाले जवान। प्रादेशिक सेना, इनके केसरिया रंग के साफे, जिनके साथ बंधा है इस्पात का सफेद चक्र। ये दस्ता 103 इन्फेंट्री बटालियन से जुड़ा हुआ है। प्रादेशिक सेना का हर दस्ता किसी न किसी रेजिमेंट, थल सेना की रेजिमेंट से जुड़ा होता है। सलामी देते हुए ये जवान इंडिया गेट की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और अब थल सेना के बाद नौसैनिक दस्ते 5000 किलोमीटर का हमारा समुद्र तट और उसके रक्षक, उसके प्रहरी हमारे नाविक, ये उनका बैंड, नौसेना का बैंड, जिसमें विभिन्न जहाजों और कई प्रतिष्ठानों से आए हुए 66 वादक चुस्ती के साथ मार्च करते हुए अपने सुर और ताल पर कदम बढ़ाते। इसके बाद ये 2 मार्चिंग टुकड़ियां, पहली टुकड़ी पश्चिमी नौसेना कमान की नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट RP गुप्ता, और ये दूसरी मिलीजुली टुकड़ी है पूर्व और दक्षिण नौसेना कमान की, नेतृत्व कर रहे हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के लेफ्टिनेंट वाई सहरावत। काले कोट, सफेद टोपियों, काले जूतों से लैस, और ये है झांकी नौसेना की।
पहली झांकी पौंडीचेरी श्रेणी के सुरंग मार्जक पोत की। ये दूसरी झांकी, ये हमारी नौसेना के पोत संधायक का नमूना। संधायक को अब से 4 साल पहले 1981 में कमीशन किया गया था। इसका काम है सर्वेक्षण करना, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, समुद्र तट। और ये तीसरी झांकी जितनी दिलचस्प उतनी ही लंबी कहानी कहती है। आज तक नौसेना ने जिन तोपों का इस्तेमाल किया है उसका इतिहास है इस झांकी में। एक तरफ 16वीं शताब्दी में इस्तेमाल की गई तोप, सीधी सादी, जो मुंह से भरी जाती थी। दूसरी ओर कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित आधुनिक प्राणघातक मिसाइलें। और अब मंच की ओर, सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं वायुसेना के दस्ते। आगे आगे उनका बैंड, नौसेना, वायुसेना का बैंड नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर आर.एम. विल्सन। आर.एम. विल्सन ये धुन बजा रहे हैं निर्मल जीत, और धुन समर्पित है 1971 की लड़ाई के परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों की याद में। बैंड के पीछे पीछे हैं ये 2 टुकड़ियां, प्रत्येक में 72 वायु सैनिक, जो वायुसेना के तकनीशियन और जमीन पर काम करने वाले अन्य लोग ये उन मशीनों की देखरेख करते हैं और उन उपकरणों की देखरेख करते हैं जिनका इस्तेमाल हमारे वायुसेना में होता है। इस टुकड़े के ठीक पीछे आप देख रहे हैं वायुसेना की गाड़ियों के दस्ते को, और आगे जो ट्रेलर है इसमें ये जो विमान प्रदर्शित है ये है HPT-32, नया प्रशिक्षण देने वाला विमान। थल सेना, वायुसेना और जल सेना के नए नए पायलटों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी साल से इसका प्रयोग शुरू हो रहा है। दूसरे ट्रेलर में रॉकेट पैड और विमान भेदी तोपें। तीसरे ट्रेलर में प्रक्षेपास्त्र, आकाश में मार करने वाले R-60 और टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र, जिन्हें स्कॉर्पियन मिसाइल्स कहा जाता है। और 3 दिशाओं में काम करने वाला मोबाइल रडार PSM-33। अत्याधुनिक तकनीक से बने इस रडार का इस्तेमाल बहुत अल्प सूचना मिलने पर किया जा सकता है। कुछ सेकंडों के अंदर ये सूचना एकत्रित कर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। 5वें और 6ठे ट्रेलर में भू-वायु प्रक्षेपास्त्र, ये जमीन से आकाश में वार करने वाले मिसाइल्स हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये बहुत कम ऊंचाई पर भी दुश्मन के घुसपैठिए विमानों का पता लगा लेते हैं और अत्याधुनिक तरीके से बने हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां लगी हुई हैं। और अब जबकि भूतपूर्व सैनिकों के और दूसरे दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते आ रहे हैं, विवरण देंगे अंग्रेजी में राजीव। Thank you, Jinju. Here you can see the 11 Gorkha Rifles Regimental Centre Band and the Brigade of the Guards Regimental Centre playing the tune Old Comrade.
And befittingly, here you can see the old ex-servicemen. Here on Republic Day, we salute several things. The founding of our republic, reaffirming our commitment to democracy, and paying a tribute to the gallant officers and men who defend our vast frontiers. These are our ex-servicemen, and the President gives them a special salute. The grand old warriors who carry with them pride, memory, and a dedication and commitment to India. This is the Camel contingent of the Border Security Force. Contingent commander is J.R.C. Rathore, the assistant commandant who gives the salute. The Border Security Force is the only force in the country to have a mounted wing. These mounted troops have been instrumental in successfully tracking down infiltrators and smugglers operating in the deserts of Rajasthan and Gujarat. The Border Security Force was raised in 1965 and has to its credit several decorations and awards. 1 Mahavir Chakra and 11 Veer Chakra. The Camel contingent of the Border Security Force go past the saluting days. Coming up now are the marching contingent from the Border Security Force. These Jawans hail from different parts of the country and represent some of the best soldiers from all parts of the vast subcontinent. The contingent is commanded by K.S. Yadav, Deputy Commandant. Approaching the saluting days and giving the salute is the Assam Rifles Contingent Commander, Captain Y.P.S. Chauhan. The Assam Rifles are deployed primarily in the northeastern region on counter-insurgency and border surveillance roles. This is one of the oldest paramilitary forces with a history dating back to 1835. And coming up here is the CRPF band, playing the tune Singbar. The Central Reserve Police Force approach the saluting days. Mr. Krishnamurthy, Deputy Superintendent of Police, gives the salute. This force was raised in 1939. They first really came into the news in 1959 in the incident of Hot Springs, where they lost 10 men in the operations in the northern sector. This is the Indo-Tibetan Border Police approaching the saluting days. It is commanded by Company Commander D.S. Yadav and consists of 2 officers and 72 Jawans. This force was raised in 1962 to police the Indo-Tibet border, and apart from keeping a strict vigilance over the high mountains in extremely hostile weather and mountain hazards, the Indo-Tibetan Border Police have played important security roles during the 9th Asian Games, the non-aligned meet, the Commonwealth Heads of Government meet, in the capacity of anti-terrorist commanders. These brave officers and men have set a unique record of climbing over 40 Himalayan peaks, including 21 virgin peaks. And this is the Indo-Tibetan Border Police Band playing the tune Kadam Badhaye Ja. The
contingent of the Coast Guards approaching the saluting base. The contingent commander, A.K. Varma, assistant commandant. The Coast Guards are charged with the responsibility of protecting the maritime and other national interests in the maritime zones of India. And this is the Central Industrial Security Force contingent. The contingent commander, N.K. Kajurai, gives the salute. This was raised in 1968 and assists in providing security to public sector undertakings. It is today deployed in over 130 public undertakings all over the country. For acts of bravery and distinguished service, 81 personnel of the Central Industrial Security Force contingent have been decorated with medals and honors as they march gallantly away. And here is the Delhi police in the foreground, approaching the saluting base. This contingent is led by Mr. Vinay Chaudhary, Assistant Commissioner of Police. The contingent are 72, and they are carrying 303 rifles, masking briskly and to the man, followed by the Delhi Police Band playing the tune Badhe Chalo Police Ke Veer. And on their heels are the passive forces, so-called, and this includes the Railway Police Protection Force. This has to its credit a number of Indian Police Medal, including a President's Police Medal, and it's commanded by Mr. Uma Shankar Varma, the Assistant Commandant. Just passing the saluting base are the Delhi Civil Defence and Home Guards contingent. The contingent commander, Mr. Vijay Kumar Dua, is the battalion commander of the Delhi Guards. The Civil Defence and Home Guards are voluntary in nature, which citizens enroll themselves with the motto of selfless service. And now are the NCC contingent, the citizens of tomorrow, and from these will be the many gallant officers and men who will join our armed forces. This is the Senior Division Boys of the Army Wing, led by Senior Under Officer Santosh Sharma of Madhya Pradesh. Here is the 3 EME Infantry Regimental Center Band playing the tune Sare Jahan Se Acha, Hindustan Hamara. And in their crisp whites, the NCC Senior Division Boys of the Navy. They are led by Cadet Captain Jones Alex of Kerala. The President takes a salute now from the Senior Division Boys of the Air Force Wing. This contingent is led by Cadet Under Officer O.K.A. Ram Mohan of Maharashtra. The National Cadet Corps was established in 1948 and has today emerged as perhaps the foremost youth organization in the country. And here you can see a panoramic view from India Gate of the NCC contingents. And these have over 11,20,000 cadets, and 60,000 of them are girls. And these are the NCC Senior Division Girl Cadets, led by Senior Under Officer Gitanjali of Maharashtra. Gitanjali gives a salute to the President. Eyes right. And here's a famous girls' band contingent,
These cadets, 50 in number, are from the Birla Balika Vidyapeeth in Pilani and led by Sergeant Richa Gupta. Hum sab Bhartiya hain. Here we have the National Cadet Corps Sea Cadets, commanded by Sub-Lieutenant Shailendra Singh Raghav. The contingent consists of sea cadets from Bombay, Cochin, Madras, Visakhapatnam, Calcutta. And here is on the heels, the contingent of the massed bands of the army approaching the saluting base. And following the massed bands are the brave children on festooned elephants who have been honored, decorated during this Republic Day. And I might take this opportunity to congratulate my colleague, Mr. Jasdev Singh, who himself has been decorated with the Padma Shri this morning. Jasdev ji, congratulations from us. बहुत-बहुत धन्यवाद राजीव। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं, गजराज अपने मस्त चाल से झूमते शान के साथ इस समय राजपथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और नौबत शहनाई के इन पावन स्वरों के बीच इन बहादुर बच्चों को आप देखिए। जांबाज बच्चों पर कोई भी देश नाज कर सकता है। दिखते हैं बहुत छोटे छोटे, लेकिन ये वो हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर दूसरों की जान बचाई है। इन बच्चों को परसों 24 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने वीरता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये बच्चे हैं केरल से कुमारी सुनीता, कर्नाटक से के.एम. कृष्णमूर्ति, महाराष्ट्र से मिलिंद पांडुरंग शस्त्राकार, गणपति पांडुरंग, दिल्ली से गुरप्रीत सिंह, उड़ीसा से इमामुद्दीन खां और करुणाकरण प्रधान, मध्य प्रदेश से कुमारी सुमन गुप्ता, पंजाब से राहुल जिंदल, असम से यदुमणि कलित और निरंजन भुइया और गोवा से विंसेंट डोमगस फर्नांडिस, हरियाणा से राजवीर सिंह, महाराष्ट्र से घनश्याम कृष्ण काले। बहादुर बच्चे जिन पर कोई भी देश फख्र कर सकता है। और अब ये ध्वज रंग बिरंगे, इनके नेतृत्व में इस समय राजपथ पर बढ़ रहे हैं दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के कोई 1100 बच्चे। देश का भविष्य जैसे राजपथ पर उतर आया हो, फहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज और उसके तले कल के भावी नागरिक जिनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी होगी। जो अलंबरदार हैं उस ध्वज के, जो देश का तिरंगा है। और ये बैंड, ये शेर जवान बहादुर बच्चे अनुशासन के साथ, और धुन भी इनकी है शेरे जवान। राजपथ पर लय, सुर और ताल का समागम। और इन बालिकों को गिनती में 120 छात्र छात्राएं क्या करते हैं ये जरा आप पहले देखें। जी हाँ, इनके हाथों में हैं हॉकी स्टिक्स। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में नतीजे कुछ भी रहे हों, पर भारत को सदा इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊंचा किया है और ये बालिकाएं इस समय आपको नृत्य और संगीत के माध्यम से हॉकी खेल के तरह तरह के हिट्स,
स्ट्रोक्स आदि दिखाएंगी। कॉमन बुली, ड्रिबलिंग, हॉकी को खिलाड़ियों के बीच में से इधर उधर निकाल कर ले जाना, एक जबरदस्त कला जिसके लिए भारतीय हॉकी खिलाड़ी जाने जाते हैं। एक और दल 140 छात्राओं का। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ के 120 छात्र छात्राओं को दल ने हॉकी का प्रदर्शन किया और अब आज के क्रम सेक्टर 2 और सेक्टर 7 में राष्ट्रीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करने में आगे आ और देखा आपने इनके हाथों में है लेजिम। लेजिम जो कि कसरत का एक बहुत ही अच्छा तरीका, वर्जिश का, खासतौर पर महाराष्ट्र में ये बहुत ही लोकप्रिय है। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में मराठा वीरों और सैनिकों का ये प्रमुख व्यायाम होता था।
और यहाँ राजपथ पर उपस्थित दर्शक समुदाय की आंखें एक बार फिर बाईं तरफ मुड़ती हैं राजपथ पर, और जहाँ आप भी देख रहे हैं इन छात्राओं को। In their blue skirts and white blouses will present a colorful drill making different patterns and waves with their colorful hoops. गिनती में 200 छात्राएं। रंग तरंग, और जैसा शीर्षक से जाहिर है, जैसे राजपथ पर रंगों का सागर लहरा उठा हो, मनोहारी, आकर्षक। ये बच्चे हैं जिनकी अपनी लीलामयी दुनिया है, उनका खुशियों से भरपूर संसार, जिसका एक नमूना इस समय आप देख रहे हैं यहाँ राजपथ से। बच्चे जो हम इंसानों की दुनिया के सितारे हैं, जिनकी चमक से हमारी दुनिया में उजाला है। लय और ताल के साथ नई नई मुद्राएं, नए नए रूप। कभी फूल तो कभी ऐसा लगे जैसे किसी समुद्र की लहरों में एक साथ हलचल मच गई हो। और एक बार फिर राजपथ पर एक छात्र बैंड सुरों का संसार सजाता, धुन हंसते लुशाई। यातायात सिग्नल्स के निशान देकर आप चौंके नहीं, ये बालिकाएं भी कुछ दिखाएंगी आपको। 106 छात्राएं हैं स्कूलों से।
इन बालिकाओं को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार सड़क पर यातायात को नियंत्रित किया जा सकता है, ट्रैफिक पर कंट्रोल रखा जा सकता है, लेकिन सब कुछ संगीत के माध्यम से। यहाँ राजपथ पर, वैसे दिल्ली के नागरिक जानते हैं कि कई बार बल्कि शहरों में भी ये होता होगा, पुलिस के बच्चे ट्रैफिक पुलिस की सहायता करते हैं और बाकायदा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सहयोग देते हैं। हाथों में मोटर के स्टीयरिंग लिए हुए, जैसे एक प्रतीक हो मोटर गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं। पैदल सड़क पार करने के लिए भी यातायात पर नियंत्रण रखना होता है। ठीक है, आप ठहरिए, आप चलिए। आइए, अब आपकी बारी है, आप उधर से जाइए। और पैरों पर पहिए, राजपथ पर एक बार फिर हलचल। ये छात्र छात्राएं, गिनती में कोई 90, रोलर स्केट्स हैं इनके पांवों में। कितनी कुशलता से ये सब कुछ कर रहे हैं, ये तेजी, ये स्फूर्ति, लेकिन आप जानते होंगे बहुत साधना, बहुत तपस्या और बहुत अनुशासन की आवश्यकता है जो कुछ ये करके आपको दिखाएंगे उसके लिए। ये आकार, इनकी ये मुद्राएं सभी दर्शाती हैं कि कितनी मेहनत होगी इस सब के पीछे।
और अब पढ़ रहे हैं आप मिल के चलो, एकता, निष्ठा और मिल के चलने के गीत गाते हुए। क्या आवाज है इन बच्चों की, ये देश की आवाज है, मिल के चलो। मिल के चलने में ही सुख है। आगे राजीव मेहरोत्रा। Coming up next are the tableaux, a tribute both to our rich heritage and our diversity, and to the promise of modernity and change, of continuity and change. The first tableau is presented by the Department of Youth Affairs and Sports, with the Year of the Youth 1985 as its general theme. Preceding the tableau are a number of boys and girls from the National Service Scheme. With their vitality and energy and youth, they carry the Youth Year banner forward, symbolizing the youth themselves and their role in the forefront of national progress. And here is the tableau celebrating the conquest of Everest by the first Indian woman, Kumari Bhajendri Pal. The expedition to Everest was blessed by the late Prime Minister and was sponsored by the Department of Youth Affairs. It was organized by the Indian Mountaineering Foundation and was led by Colonel D.K. Kullar. All eyes have been here in the last few minutes at least, the last half hour, been focused on the sky and the bright sun that we now have, which is a good omen for the climax, the finale of the flypast. And now the tableau from Karnataka, depicting the famous Dussehra festival. Dussehra is perhaps the most important and colorful festival of the state of Karnataka. It is celebrated there from the days of the Puranas.
And this ancient ritualistic festival is held even today with pomp and splendor in Mysore city. The ceremony lasts for 9 days and commemorates Chamundeshwari, who killed the demon Mahesura, and is worshipped in the Mysore palace. In the city, on Vijayadashmi Day, a colorful procession is taken out. In the evening, the statue of goddess Bhuvaneshwari is taken in the procession on a tastefully decorated elephant on a 6-kilometer route. A 45-day Dasera industrial and cultural exhibition is also organized during that time. Rajpath has indeed witnessed the magnificence of color and spectacle this morning. And the tableau now on your screens is from Mizoram. It depicts a life in a typical Mizo village. You can see activities of the husking of paddy, weaving, basket making, and drawing of water from the village point. Towards the rear of the tableau, you can see hunters and folk dancers. And this is the tableau from Orissa. It makes an attempt to recapitulate the ancient glory of the people of Orissa and their maritime traditions. You see a traditional boat furnished and decorated with folk paintings, colorful saris and festoons on the two sides. And in this shot, you can see the tableau from Mizoram passing the saluting base. And here is the tableau from Gujarat. It shows the life of the Adivasis in the state. The tribals in Gujarat constitute 14% of the state's population. They are concentrated in the eastern hilly region, spread over 8 districts. The Adivasis have their own cultural traditions, folk dances, musical instruments, utensils, ornaments, gods and goddesses, and fairs and festivals. And here once again is the tableau from Orissa as it goes past the saluting dais. Orissa in the ancient days was well known for her maritime tradition. And even today in distant countries in Southeast Asia, there is evidence of contact of sailors from Orissa with these countries. And on your screen now is the tableau from Bihar, representing the ancient University of Nalanda. Nalanda was known all over the world as a proud seat of knowledge in ancient times.
Nalanda was situated in Bihar, south of the river Ganga. About 1500 years ago, over 10,000 scholars from all over the world came here in quest of knowledge. And the tableau from Bihar seeks to bring out the spirit of Nalanda. There you can see President Alfonsine on the right of President Zalsing, with the Prime Minister and his wife, as the tableau from Gujarat goes past and the tableau from Bihar approaches. As you get a closer look at this tableau from Bihar, you can see the main stupa, at the foot of which some scholars are attending classes. And on the gate is a new student, seen trying to get entry and establish his claim to attend the university. And the students at Nalanda represent different parts of the country and community. Nalanda, the sacred grove of knowledge. Nalanda, where the ancient Guru Shishya tradition flourished and offers a model to us even today. The tableaus weave their way down Rajpath towards India Gate. श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। श्रीशैलम मंदिर के मुख्य देवता